So let's welcome again Deepak Daftari for another session on journey of prominent woman domainer of India. Neha Gupta, please. Hello everyone, I am Neha Gupta. I am from Karnal and I am working in. Good afternoon everyone. I am Neha Gupta. I am from Karnal and I am working in brand level niche for past 1.5 years. I would like to start my journey from the very beginning. How I entered in the industry. My entry in the industry is completely opposite. Actually, what happens with most of the people, first they buy their first domain and they start marketing their domain. But for me, I bought my first domain for making my blog. When I was in college in MTech first year, I bought my first domain for creating a blog on storytelling. But I was not able to work on that. So after 1 year, that got expired. And at that time, I received a call from GoDaddy marketing team. Most of the people find this call very irritating, like they call you and tell you renew the domain. But for me, the girl on the call convinced me to renew the domain, but I was not interested. So she told me to sell the domain on the GoDaddy auction. But why did you buy Neha Records? I'll keep on prompting you. Because Yeah. this is how we make it interactive for the audience. So what was the thought process of using Neha Records? Are you a rebel by nature? Yeah, Or was it yeah. eye-catching? Yeah, Sorry. So are you a rebel by nature? Was there any thought process or was it the only available option? What made you buy that one only? No, because I was creating a blog, the storytelling of the people who are doing something unconventional in life, who are not doing daily jobs, who are doing someone on traveling and who are doing their own startups and who are working in the social sector, mainly apart from the job. So that was the main thing on. But that has your name. So were you the rebel or you were Because trying? I am the rebel by nature, of course. Okay. That's why I'm here. If I would not be a rebel, I was supposed doing a job. Because I was getting many opportunities, getting good jobs, government jobs, but I never wanted to do any job. That's why I am a rebel deep inside. That's why I bought this domain. So when you bought this domain, you had finished your education, you were... I was in MTech first year and after 1 year, I was in MTech second year when this domain dropped. And then I came to know about this industry. So it was like, not anyone take this call very seriously. Like they just told me and you take it casually and you just forget about this. But I was mainly thinking to start something. I always wanted to start something. But I have no idea what to start. So I was free at that time. So I started my research on this industry. It is something really genuine or it is something fake. So for 6 months I was searching the web and I was searching everything. But after 6 months I just got a little idea. Like there are some domains on DA and PA, good DA, good PA you can buy and create some private blog network. So I bought a tool which filters the domain, that is the web scraping, and you get some domains which have good DA and PA. But I was not able to sell any domain. Which was the tool? Tool, I don't remember actually Okay. at this time. I will tell you later, I will do some research. So, but I was not able to sell. Then I started searching again. So after some time, I thought like it is a crap industry, it is cyber squatting or something like scam, because on the web there is not any good information available actually. If you search on the web, you get the idea like it is like a lottery ticket. Some people posted like हमने एक domain कल खरीदा और आज बेच दिया. So not any good information you get on the web. Why did you think that it was cyber squatting? What made you think? What was the thought process? आपको ये क्यों लगा कि ये इंडस्ट्री साइबर स्क्वैटिंग है या आपने कहीं से कुछ सुना या किसी हाँ, दोस्त नेट ने पे कहा? मैंने रिसर्च किया तो नेट पे काफ़ी साइट्स पे दे रखा था लाइक साइबर स्क्वैटिंग है या स्कैम है, तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कहीं पे नहीं था पूरे नेट पे. Okay. But after 2 months, luckily I got landed in domainsherpa.com. Okay. It is a very good blog written
written by Michael Seifert. Mike Seifert. Yeah. So that is a very good blog with very practical information on the industry. So I started reading that blog, and 4 to 5 months I keep on reading, and there is a practical interviews of the people who are working in the industry. So 4-5 महीने जब मैंने खूब स्टडी किया तो मेरे को लगा कि यार बहुत सही चीज़ है ये, और इसमें ना मेरे को लगा आज मैं डोमेन लूँगी और 3-4 महीने में बहुत पैसा आ जाएगा मेरे पास। तो आपको लगा कि आप डोमेन रजिस्टर करोगे और फिर रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे? हाँ, फिर मेरे को वहाँ पे सोच ऐसे मेरे को $10 का डोमेन लिया और 20,000 का बेच दिया, 2,000 का लिया, कल 25,000 का बेच दिया। तो मुझे लगा कि फाइनेंशियली मैं बहुत जल्दी से पैसा कमा लूँगी, फिर मैं अपना जो मुझे करना है उस पर काम करूँगी। क्या करना था आपको पैसे कमा के? मेरे को वो अपना वीडियो प्रोडक्शन कंपनी मैंने स्टार्ट किया, वो मुझे करना था। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया स्टोरी टेलिंग से, वही मुझे करना था और मैंने स्टार्ट किया अपना खुद अब 2 साल बाद। बट उस टाइम मुझे लगा 2-3 महीने में आ जाएगा, 2-3 महीने में स्टार्ट करूँगी उसको। एंड जॉब में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, तो जैसे मेरा कॉलेज खत्म हुआ मैंने फिर पूरा स्टडी किया, फिर मैंने 20-25 डोमेन बाई किए। उसमें गिवन था कि इफ़ यू हैव लाइक गुड सर्च वॉल्यूम यू कैन बाय द डोमेन विद गुड सर्च वॉल्यूम, गुड CPC एंड दैट यू कैन ईजिली गेट सेल। सो मैंने इस टाइप के काफ़ी सारे डोमेन बाई कर लिए 20-25। मुझे लगा अच्छा CPC है, अच्छा सर्च वॉल्यूम है, तो आराम से बिक जाएगा। फिर मैंने आउटबाउंड किया, बट कोई भी डोमेन सेल नहीं हुआ उसमें से, तो मुझे लगा यार ये तो आउटबाउंड आपने जब किया तो जिनको आउटबाउंड किया उन्होंने गालियाँ निकाली आपको? जैसे जनरली हमें बहुत गालियाँ मिलती हैं। लकी यू, लकी यू, क्योंकि जनरली हमें जो गालियाँ पड़ती हैं हम स्टेज पे खड़े होकर बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि लोग ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं कि 14 जनरेशन का उद्धार कर देते हैं। खैर, आप लकी थी। लड़के का नाम से ही गाली नहीं कर देगा, कोई मना कर देगा पर कोई गाली नहीं देता। So you are using your name as an advantage. Even many guys who do outbound use the name of girl when sending their email. So I think that has. तो उससे ईमेल खुलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है या रिप्लाई की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है? नहीं उससे कि कोई गाली नहीं देता, आपको मना करेगा तो पोलाइटली मना करेगा। कोई बहुत ही बदतमीज आदमी है तो गाली दे सकता है। So lesson for all of you that gender theft does work. Actually in the favor. So मेरे पास ऑफर आया एक डोमेन पे $100 का। मुझे लगा यार वैल्यूएशन डोमेन शेयर पे जैसे पढ़ा था उसका वैल्यूएशन निकाल के तो $1500 बन रहा है, यार $100 में क्यों बेचूं मैं इसको। तो मैंने बेचा नहीं $100 में। उसके बाद वो क्लाइंट चला गया $100 वाला भी, तो मुझे लगा यार ये तो नहीं होने वाला, ये तो बहुत पता नहीं है, आई डोंट थिंक इट विल वर्क। सो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड देन आई थिंक कि यार जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ। पहले मैं स्टार्टिंग में जॉब किया, 2 दिन में मैंने जॉब छोड़ दिया। अब मुझे लगा जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ चलो। बट फिर देयर इज इंडिया ट्रिप जागृति यात्रा दैट इज फॉर द एंटरप्रेन्योर्स मेनली एंड दिस लाइक द 500 एंटरप्रेन्योर्स फॉर ऑल ओवर द इंडिया एंड सम फॉरेनर्स फ्रॉम फॉरेन आल्सो। सो मैं उस ट्रिप पे गई, 15 डेज का ट्रिप था। तो वहाँ जाके मैंने अपना आइडिया शेयर किया बहुत सारे लोगों के साथ। एक्चुअली मतलब मैं पहले शेयर करती थी, किसी को समझ नहीं आता था, वो बोलते थे यार ये क्या लेकर आई है, तो कुछ होता ही नहीं है। तो वहाँ मैंने शेयर किया लोगों के साथ। तो वहाँ काफ़ी सारे स्टार्टर्स वाले थे, तो उन्होंने बताया यार हम भी डोमेन देख रहे हैं अपने ब्रांड के लिए, हमें कोई डोमेन नहीं मिल रहा अच्छा। तो एक बंदे ने बताया कि यार हाँ मेरे पास एक डोमेन था काफ़ी अच्छा और ऑफर आया मेरे पास, बट ही बोट द डोमेन फॉर हिज कंपनी, सो आई डोंट वांट टू सेल। तो काफ़ी मतलब मेरे को लगा कि हाँ लोगों को मालूम है, जो अवेयर लोग मिले मुझे वहाँ पे। तो हाँ मेरे को लगा कि ब्रांड लेवल में कुछ काम कर सकते हैं, बिकॉज पहले DAP वाले लिए वो बिके नहीं, कीवर्ड्स लिए वो भी नहीं बिके। तो मुझे लगा यार क्योंकि ऑफकोर्स हमें डोमेन चाहिए ब्रांड बनाने के लिए, तो उनको नीड है डोमेन का, जितना मुझे समझ में आया। क्योंकि तो कीवर्ड जब ये गलतियाँ रियलाइज हुई कि DAP बिक नहीं रहा है, आउटबाउंड बिक नहीं रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलती है, तो ये गलती सुधारने के लिए आपने लर्निंग्स के लिए कहाँ जाना उचित समझा? मैं एक्चुअली इंडस्ट्री को कनेक्शन नहीं था, मैं किसी को जानती नहीं थी बिल्कुल भी। So have you put a next slide on that? नेक्स्ट स्लाइड हियर, दैट इज द फर्स्ट सक्सेस। Okay. तो मैं किसी को जानती नहीं थी, मुझे पहले लगा कि कीवर्ड्स भी नहीं बिक रहा, तो मेरे को लगा ब्रांड्स में आई थिंक आई शुड ट्राई। तो मैं आई वापस, फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। आई हैव आइडिया अबाउट स्नैप नेम्स, तो मैं स्नैप नेम पे गई सबसे पहले। वहाँ एक डोमेन में बड़ा अच्छा लगा bbqstores.com। मुझे लगा ये जो डोमेन है इस पे आप ब्रांड बना सकते हो। तो मैंने What was the thought process? इट इज लाइक स्टोर्स लाइक The reason I'm asking you is seem like it seems like a brand level, like combination of words and the keywords, what are the keywords तो like ये गट फीलिंग थी कि डेटा की फीलिंग थी? Because of not data. डाटा वाला तो वर्क नहीं किया, ये वो gut छोड़ feeling दिया। किया। हाँ, उसके बाद जितने मैंने गट फीलिंग के बेसिस पे लिए और बेचे। Okay.
एंड बट इज द और गूगल पे जाके देखा कि हाँ BBQ की कंपनीज हैं जो BBQ में काम कर रही हैं, तो दैट वाज द मेन फर्स्ट कीवर्ड्स क्या डोमेन के अंदर, और उसके बाद गूगल पे कोई कंपनी है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो काम कर रही है। तो आपको उस टाइम पता था कि BBQ इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर बारबेक्यू इन US बारबेक्यू स्टोर्स, बारबेक्यू इज अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट, तो आपने ये रिसर्च किया था कि BBQ इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर BBQ is like famous thing. yeah barbecue, so generally people instead of writing barbecues they write BBQ, so ये आपने रिसर्च की थी कि ये गट फील से ये आपको मैंने गूगल पे टाइप किया तो पता चल गया। ओके तो ये डोमेन मैंने वहाँ देखा, तो नेक्स्ट डे मैंने फिर देखा वहाँ से जा चुका था, फिर GoDaddy पे देखा $10 का मिल रहा था, मैंने कहा चांदी होगी 79 का, मतलब $10 का मिल रहा है, तो मैंने वैसे बुक किया और आउटबाउंड किया। आउटबाउंड करते ही 2 दिन में ऑफर आ गया, मतलब 2 दिन नेगोशिएशन चला और 550 में क्लोज हो गया। कितने में? $550। 550। एक ही डोमेन लिया था, $550 में क्लोज। सो $10 का आपने 2 दिन में 550 में बेचा। उसका पैसा 60 डेज बाद आया था मेरे अकाउंट में स्टिल ओके। फिर उसके बाद मैंने वहीं मतलब मैं स्नैपनेम से ही बाई की, सेकेंड में स्टार्टिंग में किए। ब्रिज ट्रैवल्स किया $19 का, वो $60 से बिका। तो ऐसे फिर जेल स्टूडियो, ये SQL स्टूडियोज किया, पॉलीफिया, जेल स्टूडियोज, सेम मेथड, सब में सेम मेथड, एंड जो भी पैसा है इन्वेस्ट किया, क्योंकि आई वॉज नॉट अर्निंग, कोई मेरे पास वो नहीं था, फंड नहीं था, जो भी सेविंग्स कर रखा था मैंने, क्योंकि मेरे को एंटर में स्टाइपेंड मिलता था, वहीं से स्टार्ट किया था मैंने। तो ये सब आपने $10 में खरीदे कि $69 की, $79 की, बैक ऑर्डर की, कैसे खरीदे आपने ये सब? बैक ऑर्डर, पहले $10 फिर $19, फिर उसके मोस्टली बैक ऑर्डर। So you were learning, जैसे जैसे आप बेचती जा रहे थे, you were acquiring knowledge, you were learning. So कहाँ पढ़ा आपने? Did you read blogs or everything was from domain Sherpa में? बाकी नेट पे भी जो इन्फो मिला, मेनली डोमेन शेपर से लर्न किया, नेम क्रॉस से भी थोड़ा बहुत लर्न किया। So on an average, how much time were you spending on researching? सीखने में आप Full day. Full day. Yeah, I was doing full day actually, because when I do something, I got addicted. Like I can't focus on 2-3 things at a time. Right. So I was researching full day. उसके बाद these are some of my top sales. So after that I went on a conference where I met some people and they thought that she's working in the industry for the 6 months only and she's buying and selling domains for so much high value, so maybe she's just showing off. So here I want to show you the proof. So जैसे ये आपने यूया बेचा $13,500. Can you give us a small background? आपने कितने में खरीदा? If you are able to disclose. No. जितने भी आपने खरीदा, क्या प्रोसेस था, कैसे कॉन्टैक्ट किया? कैन यू गिव अस अ स्मॉल बैकग्राउंड सो दैट पीपल अंडरस्टैंड दैट हाउ यू वेंट अबाउट द प्रोसेस एज अ न्यू पर्सन इन द इंडस्ट्री एंड येट यू कुड मेक अ 5-figure सेल? थोड़ा बताएंगे इस प्रोसेस के बारे में, सेल के बारे में? Regarding your.com, whatever makes you comfortable. You have given enough examples, but maybe that's the highest sale. तो इस सेल के बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें. Yeah, this is a brandable domain and this is a very big company. You are in the China, like YouTube. In China, I think YouTube and all this are not allowed. This is like a very big company in China. Like it is named like a YouTube, but it is a startup and it is a well-funded startup. So मेरा जो भी अप्रोच है, जितनी भी मैंने डोमेन्स बेचे हैं, मोस्टली माई फोकस इन द स्टार्टअप्स, बिकॉज जो भी ब्रांडेबल आप बेचोगे, जो एस्टैब्लिश कंपनी है हु आर वर्किंग 10 to 15 years, they are already established in the market. They are not interested in changing their name, their main name. They want change. So कंपनी जो ग्रो कर रही है, जब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम हम $10 का डोमेन लेते हैं, थोड़ा सा ग्रो करती है जब कंपनी, तब वो इन्वेस्ट करती है डोमेन में, मेन डोमेन के अंदर. तो मोस्ट ऑफ माई डोमेन्स आर आई सोल्ड टू द स्टार्टअप्स. तो ये तो आपने अपने फंड से लिया होगा. You paid 4-figure sum in dollar terms. All on the 4 figures. So in Indian rupees, it's a sizable amount of money for somebody who is new to the industry and reinvesting their own money. तो आपको डर नहीं लगा कि कल को ये बिके नहीं तो मेरा तो एक फिक्स्ड फंड है, तो ये इतना पैसा ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर मैं नई इन्वेंट्री कैसे खरीदूंगी? I had enough money before I bought this. Like I bought 4 to 5, and I was sure like if I bought 4 domains, 1 or 2 will sell. And my research was so deep. I don't only research on a domain. I research on a client also. Like if a domain like PetNet, it has 10 clients. I research on all the clients. What is their background? How many domains they have, and have they changed the domain in the past? Like there is a domain. There was a client who has changed domains 2 times in the past. They were upgrading the domain. So of course they will get better domain. They will upgrade the domain. So my research was very deep on all the clients and domain. So I was sure this guy will buy most of the time. So that's why I buy very rare number of domains. And
तो आप ये इतना रिसर्च हर नाम खरीदने के पहले करती हैं कंपनी में? जैसे आपने पेटमैक्स खरीदा, स्टोकर खरीदा और आपकी इन्वेंट्री हाई वैल्यू करती हूँ तो हर नाम की पे करती हूँ यू जो डू अ इन डेप्थ रिसर्च? या अगर $10 में लेती हूँ तो नहीं करती सब पे, तो बल्क में भी लिए काफ़ी, बट ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला, मुझे मज़ा भी नहीं आया उसमें, तो अभी यही पैटर्न फॉलो कर रही हूँ फिर से। सो ये या हाउ डू आई बाय डोमेन्स, कीवर्ड कॉम्बिनेशन, दिस आई टोल्ड यू, कीवर्ड शुड लुक गुड, and number of companies using similar keywords will be poor branding. Complete client research, client history. What do you mean by poor branding? Poor branding, like if I have a domain, for example, if I have a domain like plastic-energy.net and I have plasticenergy.com, so I will go to that guy. The domain you're using it has hyphen, so a lot of your typing traffic is getting lost to the .com version. So you try to tell the client that the upgrade of the domain name is going to Yeah. result in a better revenue or a better branding for it. Yeah. How do you make the client understand that? आप उनको डेटा देती हैं या सिर्फ डोमेन नेम देती हैं? No data, only domain name. So actually they understand that, yes. तो Okay. इसमें ज़्यादा बताना नहीं पड़ता उनको, because उनको already required है, इसमें क्या है कि need है client को. I basically approach the client who already have the need, who already wanted that domain, बट उनको मिला नहीं, बट अप्रोच जैसे आपने उसको किया तो ही नोज यार ये डोमेन को चाहिए था, तो उनको ऑलरेडी चाहिए होता है वो डोमेन, सो वो अपने आप ही आपके पास आते हैं, कभी मेरा डील में ड्रॉप नहीं होता, जितना मैंने ब्रांड में काम किया कभी ड्रॉप नहीं हुआ मेरा डील, बट कीवर्ड्स में मैंने काम किया बहुत डील्स ड्रॉप हुए, तो मुझे मज़ा नहीं आया, इसलिए मैं ब्रांड में ही करती हूँ मोस्टली काम। लास्ट वन, दिस वन इज द कीवर्ड, दिस इज द रीजन से नाउ आई एम मूविंग फर्स्ट कीवर्ड ऑल्सो। So client history, client domain history, need factor of client. That is the main thing I focus, the need factor of client. Here what I do, like there are the 10 clients, I research on that, and on the basis of that manually I did, like the need factor of client is 7, 8, 9, 6, and if it is more than 7 then I buy the domain. So that is purely my made up concept. Last is gut feeling, that is the most important, that no one can teach you. So these are some brandable keywords. First we have to understand what are the brandable. They are the catchy words or that a business use. So most of the people think they are only made up brandables that have no meaning, like Adidas, Zillow, Google. But brandables are 3 types. First is the made up. Second is the catchy brandables. Catchy brandables are डिक्शनरी में है, बट 2 वर्ड्स हैं अलग अलग, कोई मीनिंग है सबका, बट ज्वाइन कर दिया दे हैव नो मीनिंग, लाइक सर्किट सिटी एंड गेम क्लाउड। सो 2 वर्ड्स ये इस टाइप के नाम है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। एंड हाइब्रिड ब्रांडेबल्स लाइक मोडा लिविंग, मोडा इज अ शॉर्ट फॉर मॉडर्न लिविंग, सो ज्वाइन कर दिया हमने 2 वर्ड्स को। So most of the people think why brands sell for so much high value. Here you are seeing these logos. So I want to just show you the power of branding by just showing this logo. Like you see, this is the PayPal.com and Domino's.com. This is the Bitcoin.com, Mantra.com. And by looking at the logo, you don't only see what is the brand name. You can also guess what is the domain name they have. So this is the power of branding. If you have right brand name, you should have the same domain, same email ID. That make the most sense. So this is example of good versus bad branding. Like a company name is Primrose, and they have the domain primrose.com and email ID is info@primrose.com. But if a company name is a Bridge Travels, but domain they have worldtravelwithbridge.co.uk. In that scenario, most of the traffic the traffic is go diverted to bridgetravels.com. So it is not the example of good branding. And email ID they have at the gmail.com. If you get the email like in your inbox, if you get an email from this email ID, would you open that email? You will see this is a spammy content, so you will not open. So you should have all the domain name, email ID similar to your brand name. Similarly, here you see there is a company, cake selling company. One has a cakes.com and one has a buycakes.biz. So of course you will trust the cake.com. That is subconscious in your mind. Yeah, this is a good brand. This is complete domain research. Before you buy a domain, you should see the following factor: what is the age of domain, earlier usage of domain,
any trademark a domain has, and potential companies using the same keyword. Sometimes a brand name you choose have a meaning in different language. You can look for that and you get feeling. How do you find clients? For finding the clients, first the Google and Bing searches. That is the most best clients you get. That is ranked on the first page or second page. Then this is the rapid inferior TLDs. Look at the PPC advertisements at search engines. And you can use Domain IQ or Zetterport lead generation tool. I personally use Domain IQ lead generation tool. Here you get all the leads with the email IDs. And you can use Crunchbase and Angel.co. There you can study the trends the companies are following for their branding. Search GitHub and social media sites, search hashtags, and if you're not able to sell domain via outbound, then you can list your domain after Nick, Sido, Brandbucket, and Brandpa for the brand labels. And in the last, don't list your domain anywhere, and through Whois you get the inquiry. So this is the complete client research. What I see when I do a client research, I see the company history, number of years in the business. I mainly target the companies who are in the 2 or 3 years in the business. Website and marketing expenditure. If a company is not spending on marketing, on SEO, on website, they're not going to spend on this domain name. Company yearly revenue, company domain history, that I also already discussed. Number of domains company have. For this you can use Domain IQ, where you can get list of all the domains the company have and what are the valuation of the domains. If a company has good domains, good valuation, then there are more chances they will invest in the domain. And need factor. Tips for beginners. I have one question. Can I ask? We'll Yeah. come back to this after this. I think, yeah. Tips for beginners from my side. Before landing in the industry, you should do proper research. Domain industry is not a lottery ticket, not like you will earn the money in 3-4 months. You should do proper research, proper knowledge you should have, and proper time you should give to the industry. You should be very patient. You should be very patient. Like sometimes I just follow the client for 8 to 9 months. Then I close a deal. Choose your own strategy, don't follow others. Because everyone has different strategy and budget working for me, not working for anyone else. So set your budget and then reinvest your money. So the main thing is... Here I'll cut you in. Domaining industry is a very male-dominated industry. We hardly see female domainers. Although internationally there are quite a few, but in India we've hardly come across. Now there are people coming up. So when you started, did you feel that being a female and getting into an industry which is dominated by so many domainers, primarily males, was that something which stopped you or made you think, or that was not a factor at all for you? First of all, I want to clear that it is not a male-dominated industry. It is a male-acquired industry. Dominated means when there are more opportunities for one gender than others. By dominated, I mean the primarily scenario of domainers is male. So Then dominated in the sense majority. Yeah, majority are male. Right. But there is not like more opportunity for male. So वो आपके लिए factor था, कभी आपको सोचना पड़ा कि Actually मुझे मालूम ही नहीं था कौन वर्कर है इंडस्ट्री में एंटर से So पहले. sometimes ignorance is bliss. That what you're trying to say? Of course, even if you know, then I don't think it matters. तो कभी आपको hesitation हुई कि नहीं ये drawback है या you never thought about it? नहीं मैंने सोचा ही नहीं कभी इस बारे में. So you always had positive experiences or you had some negative experience also in this industry. You go to conferences, you go to places, you go to varied workshops and all. Did you ever feel that? Do you always had good experience or you had bad experiences also? Actually, I'm the only girl, so I think it's good for me because I get special attention wherever I go. Good. So you never had a bad experience at all? No, because अगर आप काम कर रहे हो वहाँ तो आपको फर्क नहीं पड़ता लड़का और लड़की डोमेन होना चाहिए क्लाइंट होना चाहिए. अब कॉन्फ्रेंस में तो मैं पहले गई भी नहीं थी जब मैंने स्टार्ट किया था और काफ़ी अच्छा सेल्स था मेरा तो भी. जब मैं कॉन्फ्रेंस में गई फर्स्ट टाइम तब मुझे पता चला अच्छा यार यहाँ तो कोई लड़की नहीं है. सेकंड टाइम गई तब वहाँ देखा कोई लड़की नहीं है यहाँ पे. और मैं तो नॉर्मल थी लाइक कहीं भी जा रही हूँ. जो मेल्स थे वो बहुत शॉक हो गए यार लड़की कहाँ से आ गई है. So what was your next reaction after that?
Nothing? You Nothing. took that as Just an ignore. advantage? Okay. Do you have any other tips to share? Yeah, I think for women, I think this is the industry where there is equal opportunity for male as well as female. So I want to see more women working in industry in the future. And I think women should not feel like it is a male-dominated industry. I don't feel it is a male-dominated industry because there are the many male who are using email IDs of the women when they're sending emails. So I think that is an advantage for women when doing sales. So this is the exact message we wanted to highlight to the audience today, and all thanks to Neha for having been gracious enough to come all the way from Delhi and share her experience. Is that it's never disadvantageous, nothing is a barrier. If you have the will, you always have the way. She's a prime example of it, and that is why we wanted to focus her, put the limelight on her in this conference, trying to show you that every industry has disadvantages and advantages, but if you have the will, you'll succeed. She did it in 2.5 years. It takes a lot of time and effort to make a 5-figure sale. In 2.5 years, you've already had quite a few 5-figure sales. You've invested a lot of money. Nothing is a barrier. The barrier is always in the mind. If you think out of the box, if you're willing to put in the hard work, the research, the effort, and the appetite to risk is there. She's a prime example of that. Please give her a big hand. We'll take 2 questions with Baba's permission. 2 questions. You had a question, sir? आपने बताया कि 1 second. We'll just get your mic. With your question. Hello everybody, I'm Anupam Singh. I have one question. You just said that let's say one client of yours from China and they are into business and they you have some domain name specifically to sell, ready to sell, right? So my question is कि वो आप कैसे पता करते हो कि आपने कुछ एक ब्रांड नेम रखा है तो ऑलरेडी ऐसा क्या है कि वो ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट में है और उनका डोमेन नेम नहीं है? Yeah, you can go on Google and type on the Google. There you can see the companies who have a similar keyword in their domain, but not the exact domain. Okay. तो ऐसे में आप उनको खोज तलाशते हैं and Yeah. then you sell. And second, you can use the tool Domain IQ and Zadaboard, where you can type the keyword and you will get all the list of clients who have the similar keywords in their name, but domain is not good. Domain is not good, but Yeah. they do have domain. Yeah, but that is not good. That has a hyphen or extension is not good, and some prefixes which they have added, but they are not sounding really good. Okay. Thanks. Any other question? So I think everybody is very clear. From the conference organizers, we are really very thankful here. You could come, you could spend some time and you could share your knowledge with us. Thank you so much for your time. Thank you, sir, Deepak Bhuttari sir and Job Pudal sir for giving me such opportunity to share my journey. Thank you all. May I request Mayur to come and give the memento to her?